Lucknow is not an ordinary city. For over a century under the benign rule of the Nawabs of Awadh, it was the epicenter of art, culture, dance and all things refined. Today, its heritage is synonymous with Chikankari, an embroidery craft that is mentioned in the Harsha Charita. Scholars have also reported its depiction in Ajanta paintings. Legend says this craft was gifted to artisans of Lucknow by a messenger of God in gratitude for their hospitality. Chikankari is not just embroidery, but a representation of compassion, sharing, and bonding. Other crafts of Lucknow become a family to this paradigm. I think Lucknow leaves a very strong impact on anyone. So the city in itself, the culture, so many crafts, to art forms, to dances. I think everything attracts you back and you really want to come back and do something with the city and with the people of the city. So that's what brings you back. Ingrained in the essence of Chikankari, Sangraha was founded in 2015 in Lucknow on the principles of truthfulness, excellence, pioneering innovation, vernacular sincerity, cultural responsibility, social cohesion, and sensorial experience. I'm Jaspal Kalra and I'm founder of Sangraha, a social entrepreneur. And during my doctoral work, I realized and I moved from being a craft revivalist to being a social innovator in the life of artisans, because my belief is craft is about artisans, not about the embroidery or the skill. The act of embroidery at Sangraha is an art, a skill, and complete devotion to craft. Unification is an essential part of this embroidery technique itself. There are innumerable stitches that blend together to create amazing artworks. चिकनकारी में 39 तरह के टाँके होते हैं, जिन्हें तकनीक के तरीके से 11 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे फंदा होता है, एक मोती की तरह चिकना फंदा गोल होता है, और जाली को बनाने में ऊपर से बनती है और उसको देखने के बाद पारदर्शी तरीके से दिखती है जाली। इसमें घास की पत्ती बनी हुई है, इसमें चेन स्टिक है, ये बिजली। The stitches speak to us and give us a message to be together. Sangraha was not an individual idea. It was about working with a group of artisans, and Chikan has been my passion since I would say childhood, because being born and brought up in Lucknow, and the subtleness of the embroidery was so intoxicating that it's always stayed with me during my education. And then I wanted to go back to what was authentic Chikan, and so the word is inspired from Sangraha originally, and Sangraha was about, because artisans don't work in seclusion, it's always a group that works together. So that's the whole idea about Sangraha. संग्रह हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। जिस संग्रह में आने के बाद हमारी दुनिया एकदम बदल गई है, एकदम फैमिली का एहसास संग्रह दिलाता है। संग्रह में आने के बाद कोई अलग नहीं लगता है। हम लोग घर पर करते थे, इतना नहीं कर पाते थे, बहुत परेशानी थी हमारे घर में। बहुत से चेंजेस आ गए हैं कि पहले दिक्कतें थोड़ी होती थी, कम पैसे घर पे करते थे, कम मिलते थे, यहाँ पे थोड़े सही मिलते हैं, तो बहुत सी परेशानियाँ। और फिर अपनी LIC भी जमा करते हैं, इसमें जुड़ के तो बहुत कुछ हमने गाड़ी ली और फिर गाड़ी चलाना सीखा, अब हम अपनी गाड़ी से जाते हैं। संग्रह पहचान है, संग्रह का मतलब है सबके साथ में चलना, सबके साथ काम करना। संग्रह लखनऊ की एकमात्र तो नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदा कंपनियों में से एक है जो कारीगरों को सही सैलरी, पेड छुट्टी, साल का बोनस, परिवार के सदस्यों को हेल्थ इंश्योरेंस और कारीगरों को 5 लाख तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस देती है। जी, हम लोग को बहुत कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मतलब मुर्गियाँ कहा था, फिर मुर्गियों के पर नहीं होते, लेकिन हम लोग ने इतना आगे बढ़े कि हम लोगों ने दिखा दिया कि मुर्गियों के भी पर हो सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने साथ दिया। मेरे तो घर वालों, मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने हमको बहुत रोका काम के लिए, वो तो काम, मगर हमने कहा हम करेंगे तो करें। संग्रह में आने के बाद बहुत मजबूती सी आ गई है। बाहर कभी अकेले निकलने से डरते थे, अब यहाँ आने के बाद अकेले हम
बाहर भी जा सकते हैं। पैंडमिक के समय दिक्कतें बहुत आई और बहुत सारी दिक्कतों का हमने सामना किया, जिससे हम कल्चरल रिस्पॉन्सिबल भी बने, लोगों के साथ जुड़े, लोगों के साथ काम किया और उनको साथ लेकर चले। हम उनको दान नहीं देना चाहते थे, जिसके लिए हमने गिफ्ट इकॉनमी का सहारा लिया, उसके सहारे उनकी मदद करी। Message of oneness, being honest and working diligently. These are principles of Baba Nanak, and that has kept us connected. Sacha Sauda, according to him, or the ethical trade, is nothing but exchange of knowledge, exchange of your views, and spreading goodness around. It's an act of sharing, and we understood Sacha Sauda in true essence from our team at Sangraha, and that's what made us start when we completed 6th year Sangraha Sacha Sauda, which is a medium of sharing experiences. We call artists from across, and they work with our artisans and share experiences and through an expression of art. So it's an art atelier where artist and artisan collaborate and work together. That's what a Sacha Sauda is. एकजुट होने का मतलब ये है, कोई भी चीज़ करे तो वो आसानी से हो जाती है। जब जितना भी मुश्किल काम हो वो आसानी से हो जाता है। हमें सबसे अच्छा अभी हमने जो एक पेंटिंग सिली थी, तो एक पेड़ ऐसा था जो उसके पास कीड़े मतलब जाते थे, तो वो पेड़ जो कीड़े को खा जाता था। वो पेंटिंग हमें सीने में बहुत अच्छा लगा। हमने वो मटेरियल यूज़ किया जो पहले कभी यूज़ नहीं किया था, जैसे कि पेड़ की डालें हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, तो ये सब हमने यूज़ किया और उससे अच्छा आया काम मेरा और अच्छा लगा हमको इसी के काम जो पहले नहीं किया था। जिस जगह पे काम करते हैं उस जगह को बहुत साफ़ रखते हैं और ख़ुद भी पाक साफ़ रहते हैं और अपने सर को ढाक करके रखते हैं। हमें एक दूसरे से जो है बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत से काम सीखने को मिलते हैं। जो हमें नहीं आते हैं वो किसी और को आते हैं, हमें उनसे सीखने को मिल जाता है। जो हमें आते हैं वो हम उनको बता देते हैं। हमने कमल के फूल बनाए हैं। कमल के फूलों में हथकटी से पत्तियां बनाई है, उसमें हमने सतनाम लिखे। वो नाम लिखना बहुत अच्छा लगा हमें। पत्तियों के साथ साथ एक इबादत भी फूलों के साथ दिख रही है। इस पेंटिंग में मेरा नाम भी लिखा हुआ है और एक ये भी खुशी होती कि कुछ भी हमने अगर बनाया है तो उस पर मेरा नाम है। जो जब तक ये पेंटिंग रहेगी तो इस पर नाम भी मेरा रहेगा। Paradigm of oneness is my interpretation of sayings or shabads of Baba Nanak, Sheikh Farid and Kabir Das. It's an attempt to deconstruct, to simplify shabads and understand the analogy that is hidden. Hope we spread the message that we experience within Sangraha to the universe across, the message of oneness. That's what paradigm of oneness is, the universality of oneness. So this was out of the syllabus. Okay, so it's been a great, I think the kind of engagement everyone is having, that's important, and getting into the project and being part of that project and being able to be part of the team with which you are working, that's I think very strong bonding, I would say, and a very big strength that you guys have. One is the coordination amongst your team and to be a part of another team and just bridge that gap.